Good morning students. Today we learn about tuples in Python. As we know that tuple is a data structure in Python and it is another sequence data type that is similar to the list. A tuple consists of a variable of values separated by comma. And so we can say that tuples are very similar to list except that they are immutable, means they cannot be changed, and they are created using parenthesis rather than square bracket. That values that make up a tuple are called its elements. Elements in a tuple need not to be of the same type. They can be heterogeneous, that is of different data types. So we can also say that tuples are comma separated sequences of values declared using parentheses. Creating a tuple. A tuple is created by placing all the items inside a parenthesis separated by a comma. Parentheses are optional, but it is a good practice to write it. A tuple can have any number of items and they may be of different types: integer, float, list, string, etc. Let's see the examples. We have created a tuple, my tuple, and it has no element. So it is an empty tuple. And a tuple having integers, we have just created a tuple. It contains elements 1, 2, 3. Tuple with mixed data types. My tuple equals to 1, hello, 3.4. Here hello is a string value, 3.4 is a float value, and 1 is a integer value. In the same way, we created a nested tuple. Here we have taken a tuple inside a tuple. We have taken mouse, then again a list, because it contains square brackets, then again a tuple inside a tuple. Tuple can be created without parentheses, and they are also called tuple packing, which we studied later. Now tuple creation. First, creating tuples using built-in function tuple. By using a built-in function tuple, we can create a tuple, empty tuple, and the syntax is t is equals to tuple with parenthesis. For example, t equals to tuple. When we use this, तो हमारी एक empty tuple create हो जाएगी. Then if for example if we want to add elements, हम empty tuple नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है. एक हम we want to create a tuple which contain a string values. So here we have taken a tuple fruit, and by using a function tuple, we are creating a tuple which contains the arguments cherry, apple. तो जब हमने इसको रन कराया तो हमारे पास एक tuple आ जाएगी fruit name की, और उसके अंदर values होंगे cherry, apple. So by using a built-in function tuple, we can create a empty tuple as well as a tuple containing values. Now creating tuple by accepting user input using while loop. Suppose you want to take input from the user. In the above, while creating a tuple using built-in function, we are initializing tuples while declaring. ठीक है. नेक्स्ट में हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो उसके बाय यूजिंग अ वाइल लूप, यू कैन यूज़ वाइल लूप, यू कैन यूज़ फॉर लूप, which will be suitable to you. Here we are taking input from the user while using while loop. First of all, we have created an empty tuple. Then we have taken a variable item, means एक वैल्यू हम आइटम नाम का वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं, और फिर उसको हम अपनी टपल में ऐड कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू टी प्लस ए कॉमा करके. Now creating a tuple with one element is a bit tricky. Means suppose now we want to create a tuple containing a single element, and a tuple containing a single element is also known as singleton, and it's something tricky to create a tuple with a single element.
having one element within parenthesis is not enough. We will need a trailing comma to indicate that it is in a fact a tuple. सपोज वी हैव रिटन माई टप्पल इक्वल्स टू हेलो. हेलो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिया है, प्रिंट करा दिया इसको, ठीक है, उसने सिंपल हेलो प्रिंट करा दिया. नीड अ कॉमा एट द एंड. अब जब हम इसे ऐसे करेंगे इट मीन्स वी आर जस्ट असाइनिंग अ वैल्यू टू दिस, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ सिंगल वैल्यू. तो हमने यहाँ पे हेलो के बाद एक कॉमा लगा दिया और जब हमने इसे प्रिंट कराया तो हमारा टप्पल क्रिएट हो गया है. Then nesting tuple elements. Nesting means adding a tuple inside another tuple. For example, we have T1 tuple है हमारे पास, T1 नाम का वैल्यूज है उसकी 1, 2, 3. नेक्स्ट tuple है T2 and it have values Python, C++. हम यहाँ पे string values ले रहे हैं, that's why we have included them in a single quote. Then we have taken another tuple T3 which contain elements T1 and T2. उसके जो tuple T3 है उसके जो elements है they are again a tuple. तो जब हमने प्रिंट कराया T3 को तो हमें ये आउटपुट मिल गया tuple के अंदर tuple से. This type of nest is known as nesting a tuple, means we are adding a tuple inside a tuple. For example, we want to write a program to store n number of subjects in a tuple. So first of all, we have created an empty tuple. Then we are adding elements to a subjects. How many we have taken n as an input. How many subjects you want to add. देन अब हम क्या करें कि हम सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट तो ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर एडिंग अ मल्टीपल सब्जेक्ट्स. सो जब कोई प्रोसेस बार बार रिपीट होती है तो हम उसके लिए लूप्स यूज़ करते हैं. यहाँ हमारी प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है मीन्स वी आर एडिंग एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एन टाइम्स हम सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं. सो हियर वी हैव टेकन लूप, फॉर लूप आई इन रेंज अप टू एन एंड ए में इनपुट एंटर द सब्जेक्ट्स, और हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स को ऐड करते जा रहे हैं. नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ टपल. एक्सेसिंग मीन्स हमें किसी वैल्यू को लेना है. सपोज हमारे अंदर 1, 2, 3 है तो वी हैव टू टेकन द वैल्यूज़ फ्रॉम द लिस्ट. हम तो उसे हमने बोल दिया एक्सेसिंग. यू कैन एक्सेस द वैल्यूज़ इन द टपल विद द इंडेक्स जस्ट एज यू डिड विद लिस्ट. हम लिस्ट में क्या करते थे, सपोज हमारे पास लिस्ट था तो हमें उस लिस्ट का कोई वैल्यू सपोज 2 लेना है, उस लिस्ट के अंदर वैल्यू 2 है, उसको हमने एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस थ्रू द उसका जो इंडेक्स वैल्यू था उससे एक्सेस करते थे. सेम वे हम टपल में भी एक्सेस करेंगे थ्रू इंडेक्स वैल्यू. Nested tuples are accessed using nested indexing. Negative indexing can be applied to tuples similar to a list. We can access a range of items in a tuple by using the slicing operator, same as it is in list. जैसे हम slicing यूज़ करते थे वैसे हम tuple के elements को भी access कर सकते हैं by using slicing. And trying to reassign a value in a tuple cause a type error. Means कि अगर हम वैल्यू कोई असाइन करना चाहेंगे अपने टपल में तो वो हमें टाइप एरर. असाइनिंग मीन्स वैल्यू इनिशियलाइज करना टपल को. तो अगर हम आफ्टर क्रिएशन टपल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो हमें टाइप एरर दे देगा. वाई? बिकॉज टपल इज एन इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा टाइप. For example, we have taken marks as a tuple and we are printing the marks of 0. Here 0 is the index value. तो वो हमें इसके मार्क्स दे देगा 23. सेम एज इट इज़ नेस्टेड वैल्यू है. नेस्टेड वैल्यू में ये हमारी नेस्टेड टपल है, इसके नेस्टेड टपल के हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करने हैं तो वी आर नेस्टिंग द इंडेक्स ऑल्सो. हेयर टपल 0, 0 वी आर टेकिंग. तो 0, 0 मीन्स 0 रो 0 कॉलम. तो इसमें वैल्यू आ जाएगा सिकंदर. सेम एज इट इज़ हमने लिखा है टपल 1, 0 मीन्स 1 रो 1 एंड 0 कॉलम. तो इसमें हमारे पास आएगा 8, 4, 6. सेम वे हम बाकी रोज भी हम एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी विल एक्सेस एलिमेंट्स इन अ टपल.